Okay? This call is now being recorded. Is that okay, everybody? Yes, ma'am. Okay, let Fatima Bajaj read and then you say the names of the girls present in the meeting who wants to read. Chapter And number that's how we are going to go, okay? okay. Chapter number 3, safety and first aid. Accident can cause serious injuries, so we should be careful and follow safety rules to avoid them. Observe and discuss 5 things that can cause accidents and the picture below. Safety from fire. The fire can be caused because of different reasons, some of which are listed below. Care, Listed. listen below. Care, Listed. listed below. Careless while handling burning matches, candles, and firecrackers, electrical faults, accidents while cooking, and gas leak in the kitchen. Fire hazards can be prevented by following some simple rules. One must be very carefully while handling fire. Electrical appliances and wiring should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of the wires. Synthetic clothes such as nylon should not be worn while cooking or handling fire, as synthetic clothes can catch fire easily. Okay. Explain Fatima Bajaj safety from fire. Please start explaining. How to Ma'am, be safe can I give from one fire. minute? Yes? Keshwari Fatima. Let Fatima Bajaj explain, beta. How to What how are you asking? You are asking me something? You want to do I was something? asking that she can give some names to you for Sorry? reading. After me, she can say she can give some names to you for reading. Not me. Yes, she will say the names, okay? Yes, Fatima Bajaj, explain, come on. How to avoid the fire with fire um, it, with electrical faults, accident while cooking, and gas leak. Also, the fire case caused careless while handling burning matchstick, candles, and firecrackers. One must be will very carefully while handling fire. We have to be very careful. Uh, it is and risky work. Explain, just explain the first 3 points, beta. Carelessness, electrical faults और accident वाले points explain करो. Okay, careless while handling burning matchstick, candles and firecrackers. It means कि जो हम लोग अगर careless रहेंगे, it means we are careless. Hmm. तो भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम Yes. अवेयर नहीं है और हमने अगर गैस ऑन कर दिया लेकिन अभी तक गैस शुरू नहीं हुआ और हम चले गए तो भी हम एक्सीडेंट हो सकता है फायर का Hmm. और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से भी हो सकता है अगर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया और गीला पानी वहाँ पे चला गया तो भी हो सकता है Oh, good, good, good. Okay, Fatima Bajaj, say the names and let them मैम read, okay? ओके मैम आपने मुझे बोला था। मलाड आयशा When मैम did I tell you, beta? मलाड यस आयशा मैम। आज सुबह बोला मैंने. यस मैम। No, beta, I said Fatima Bajaj will say the names. I'll let you say the names later. Let her do it today, okay, beta? ओके मैम। फर्स्ट Yeah. नेम इज मलाड आयशा Okay, Malada Aisha, she wants you to read. Come on, start reading and then explain, okay? We are revising the chapter right now. मैम यहाँ से ना फायर हैंड Yes, सैनिटाइजर। yes. We are फायर revising the हैजर्ड। chapter right now, so be careful, okay? We are just revising, going through the chapter. All right? यस मैम। फायर हैजर्ड can be Hazards.
hazards can be pre- prevented by following some simple rules. One must be very careful while handling fire. Electronic application and wiring should be एप्लीकेशन cleaned. नहीं है बेटा, अप्लायंस है. Appliance and हम्म. wiring should be cleaned चेक regularly चेक. for fu- for fu- flues for fluids or breaks in the plastic covering of the wires. Synthetic clothes such as nylon should not be worn while cooking or handling fire, as synthetic clothes can catch fire easily. हम्म. In in case of a gas leak, all doors and windows should be opened. Do not strike and match or operate any electronic switches in such as case. This is because electronic switches generate sparks, while begin switches on and off. Faulty Faulty gas pipes pipes should also be replaced. A fire can be put out by the following methods. In case of a major fire, e.g. that is a building. Wait a minute beta, don't read that, just explain how fire hazards can be prevented. Okay, What one? आपने जो read किया ना 1 2 3 4 points you have read right now, no? Yes. You just have to explain them कि क्या करना होता है fire hazards को prevent करने के लिए. Okay. जब फायर लगती है, आग लगती है ना, तो स्विचेस ओपन नहीं करनी चाहिए. Very good. सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. Very good. एंड गैस, अगर गैस लीक हुआ हो ना, तो उसका वो ही बंद कर देना चाहिए, सिलेंडर का बटन. Very good. Very very good. Then फिर गीले अगर हाथ सिलेंडर में से भी लीक हो रहा हो तो क्या करना चाहिए फिर? तो वो डोर्स एंड सब ओपन कर देना चाहिए. Very good. Then फिर गीले हाथ से स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए. very good. गीले हाथ ना होना तो भी नहीं करना चाहिए. लकड़ी Okay. से कोई वुड की स्टिक होती है ना, उससे करना चाहिए. Okay then. एंड प्लास्टिक से कुछ भी नहीं करना चाहिए. Okay. Who is reading now? Fatima Bajaj. Baloch Miza. Baloch Miza is reading. Okay, Baloch Miza, go ahead.
Ma'am, Malada Aisha is reading. Baloch Nisa wants to read now. Baloch Miza, come on, start reading. Yes, ma'am. A Yes, fire beta. can be put by the following methods. In case of a major fire, that is a building in the nearest fire station should be informed. Fireflies normally put out fires with the help of water smell. Fire can be put out using a special instrument called a fire extinguisher. Fire caused due to electrical fluids is never put out using water lines. Electricity can flow throughout water. Such fires are put out using stands or the fire extinguisher. Fire from petrol is also put out using sand. Yeah. Read, beta? Can you hear me? I cannot hear you guys. Baloch Miza, beta, did you read? Your mic is mute, huh? Yes, मैम मैंने रीड कर लिया. Explain कर दो बेटा. What is it saying? A fire can be put out by the following methods. What can you do if आग लग गई है? तो क्या करना चाहिए? What can Fire you do can to be put out put fire? out the following methods. Ma'am, your voice is so breaking. Now can you hear me, beta? No, ma'am. Still you cannot hear me? Ma'am, your voice is too breaking. Hello. I guess it is clear. My network is also good enough that you can hear me properly. Malad Aisha, you also cannot hear me better? What, ma'am? You also cannot hear me properly? No, ma'am, I can hear you. Okay, Lisa beta, there must be some network issues. Please explain. Come on, start explaining. You know what to do. Baloch Miza. Yes, ma'am. Yes, beta, start explaining. You have to explain these 2 points. Come on. मैम देखो अभी ब्रेक हुआ थोड़ा सा. हाँ बेटा, पर आप मुझे आपकी आवाज आ रही है. You explain. Okay. A fire can be put out by the following methods. When a fire है ना put out करता है means methods any method कौन से मेथड is से हम फायर को called पुट आउट कर is सकते हैं? can up what ma'am? Yes, yes, beta. Go ahead. I'm listening to you. मैम your voice is too much breaking. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं. मैम किसी का माइक चालू है इसलिए आपका भी नहीं आ रहा मीजा का भी नहीं आ रहा बस. Okay, let me see whose mic is on. Nobody's mic is on, beta. नो मैम आपकी बात बराबर ही आती है. Okay, yes, Misa, everybody can hear me properly. Come on, start reading. Start explaining. You know what to do. आपको पता है आपको क्या करना है. आप बोलो, okay? मैम मैं एक्सप्लेन तो करती हूँ पर आप बीच बीच में कुछ बोलते हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. I will not say, okay, beta? ओके मैम. In cause of a major fire that in a building, the nearest fire station should be informed. Means the nearest fire station है ना
उसको हमें इन्फॉर्म कर लेना चाहिए तुरंत. Firefighters normally put out fire with the help of water. Means fire flashes છે ને normally हमें out कर देता है पानी से help of water. Small fires can be put out using a special instrument is called fire extinguisher. Means जो छोटी छोटी आग है ना वो स्पेशली फायर एक्सटिंग्विशर से बुझती है. Fire caused due to electrical fuels in is never put out using water lines. Electricity can flow throughout water. Means fire caused due electrical fuels है ना वो पानी से electricity through water करती है. Such fire has put out using sand or the fire extinguisher from the petrol is also put out using sand. Means जो दूसरी फायर होती है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर से भी बुझती है और सैंड से भी बुझती है. वो कौन सी फायर है जिसको सैंड से या फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना चाहिए? किस फायर पे हमें पानी नहीं डालना चाहिए? वो फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड से ही बुझती है हमें पानी नहीं डालना कौन सी फायर? The fire which is caused चाहिए. by petrol, we should only use sand or fire extinguisher to पेट्रोल put में out जो that छोटी fire. छोटी Okay, Fatima Bajaj, yes go ahead, beta. मरियम बोडी वाला. Yes, Mariam Bodiwala. Yes, ma'am. Read, beta. In case a person's clothes catch fire, he or she should be made to roll on the floor to control the flames. The person should be then covered with a thick blanket. Water can also be used to control the flames. Yes, can you explain this paragraph, beta? Yes, ma'am. Yes. Explain, beta. What, ma'am? This paragraph. Okay. In पर्सन होता है जिसके घर में आग लगी होती है तो वो है ना उसके क्लोथ से है ना जल्दी फायर पकड़ लेते हैं. तो उससे है ना एक थिक ब्लैंकेट होता है ना उससे उससे रोल रोल ऑन द तो बाद में फ्लोर में ऐसे रोल हो जाना होता है तो फ्लेम्स कंट्रोल हो जाती है. Very और good. What it is saying is, if the person's clothes catches fire, अगर उसके एक कोई भी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है, then he should make to roll on the floor. मतलब उसको जमीन पे ऐसे लिटाना चाहिए और उसको घुमाना चाहिए ताकि फ्लेम्स है वो कंट्रोल हो जाए. और what else can you do? You can cover the person with a thick blanket ताकि सारी आग है वो बुझ जाए. Okay? Then who else wants to read? Fatima Bajaj, please say the name. फातिमा मेहदी हसन. Sorry, I cannot hear you. ईशवानी फातिमा मेहदी हसन. Okay, Keshwani Fatima Mehdi Hassan, you want to read? Yes. Yes, go ahead. We should avoid accident by following safety rules. However, if an accident happens, we should not panic. The injured person must be given first aid immediately. First aid is the first or immediate help given to injured people before they are taken to a hospital. What does it say, Fatima? What, ma'am? What does it say? Please elaborate, please explain. Yes, ma'am.
हमको है ना ट्राई करना चाहिए कि हम अवॉइड एक्सीडेंट के फॉलोइंग रूल्स कर सके। जैसे भी हमको है ना पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर The एक्सीडेंट हो गया तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। yes, the injured person must be given first aid immediately। जो injured person होता है ना, हाँ, वो है ना फर्स्ट एड इमीडिएटली देता है। फर्स्ट एड यानी Yes, कि उसको फर्स्ट इमीडिएटली फर्स्ट एड देनी चाहिए, जो इंजर्ड पर्सन होता है उसको। पर्सन होता है उसे फर्स्ट एड देनी चाहिए। फर्स्ट एड यानी फर्स्ट और इमीडिएट as given to injured people before they are taken to hospital। फर्स्ट एड में है ना हम इमीडिएटली इंजर्ड पीपल को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। Okay, then who else is reading? Bajaj, Insha Fatima, Fatima. Insha Fatima. Insha, Fatima, read better. Okay. Most cut and cites held on the owl. In a few days, hours, we can follow center basic step to each However, we can follow certain basic steps to ease pan and await avoid. Very good. Then instead. IN FEC fact, TI invention, infection. Clean the wound with running water to remove dirt. Apple and a steep clean and cover the wound with a clean and dry gauze or basic. Bandage, clean and dry gauze or bandage. Bandage. Yeah. Explain, beta. I'm waiting for you. Most cut and stick it all on the out in a few days. जो most cut Yes. Most cuts and scratches heal on their own in few days. मैम नहीं आता है। आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना है बेटा? नहीं, क्यों आता नहीं आता, ऐसा थोड़ी चलेगा बेटा। आप चाहो तो हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, आपको पता ही है ये इसमें क्या है, हमने किया है ना ये पहले। Yes. तो फिर आपको तो आता है। कट्स और स्क्रैचेस हील कैसे होता है? अगर हमें कोई कट वट लग गया तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर? हाँ बेटा। Roll up newspapers. हाँ, Roll up. वो फ्रैक्चर के लिए बच्चा। वी आर टॉकिंग अबाउट कट्स एंड स्क्रैचेस। अगर आपको गलती से छुरी लग गई है तो आप क्या करोगे सबसे पहले?
बैंडेज लगा दीजिए। बैंडेज लगा देंगे, वेरी गुड। तो वही तो बात कर रहा है। फिर थोड़ी ज्यादा लग गई हो तो क्या करोगे फिर? डॉक्टर के पास और बैंडेज लगा देंगे। बैंडेज लगा देंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, है ना? यस। तो वही तो बात है यहाँ पे। पर वो कट या तो स्क्रैच है, वो थोड़े दिन में अपने आप हील हो जाएगा ना, अपने आप सही हो जाएगा ना। यस। फिर आ तो गया। चलो, बजाज फातिमा, गिव द नेम्स Yes, बजाज ma'am. फातिमा। Malkani Fatima. Malkani Fatima. Mankani Fatima, Fatima Bajaj is taking your name. सुन ही नहीं रही है मैम वो। कोई बात नहीं, कोई दूसरे का नाम ले लो बेटा। Insha Bohra. Next name is Insha Bohra. Yes, Insha Insha Bohra. Bora. Next. Yes, ma'am. Yes, come on, start with. ओके मैम। मैम बर्न्स है ना? मैम आई कैन रीड। Fractures beta. ओके। What's your name? Who wants to read? मैम आई कैन रीड। Suresh. Fatima Bajaj is saying the name beta. Yes, Insha Bora, start reading. A wound is called a fracture. It is very important to not move the fractured part. मैम इंशिया बोरा की आवाज ब्रेक हो रही है। Beta, your voice is breaking, Insha. मैम 1 मिनट। मैम मैं वो Still फिर your से voice is जॉब। breaking beta. अभी भी हो रही है ब्रेक। मैम लीव होके फिर से ज्वाइन की हूँ। Okay, now start reading anyways. उसने कहा कि वो लेफ्ट हो गई है, बाद में वापस नहीं कर इकारी। Read, Insha. अब आई आवाज? Yeah. ओके। अब crack in a bone is called fracture. Then read. Insha beta, what are you doing? Fatima Bajaj, can you name someone else beta? पीमानी कुलसुम सहरा. It is very important to Next name is Pimani Kulsum Zahra. Ma'am, the next name is Pimani Kulsum Zahra. Yes, ma'am. Yes. Read better. first aid. First aid for fractures. A break or crack
in a bone is called a fracture. It is very important to not move the fractured part. A clothes ring or a splint should immediately be tied around the fracture to hold it, and the person must be rushed to the hospital immediately. What does it mean? Elaborate, please. Explain कर दो बेटा. Cause age are burns. Burns are a type of injury caused by fire, hot liquid, friction, for, from clothes, or even chemicals. They may be minor of survive. बेटा elaborate fractures, not burns. Okay. For homework, you have to write, fill in the blanks and true or false once in your book. Okay. Yes, ma'am. Your book. Okay. Okay, ma'am. Any doubts you have? No, No, ma'am. ma'am. Anything you want to ask? Okay. Ma'am, I have textbook, so I will write